वेलकम टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करूंगा आज के सेशन के लिए। सो माय नेम इज़ गौतम उपाध्याय एंड आई विल बी टेकिंग टुडेज सेशन. So quite a few participants are still joining in this session. I'll just give a brief introduction regarding today's topic. Please do note that I will keep the session a mix of English and Hindi. I'll try to keep the content as simple as possible so that all the participants are able to understand the content. Uh, at the end of the session, we'll be having a Q&A topic, Q&A session. So participants who have any doubts regarding the topic itself, please do not ask any stock specific question. But topic के regarding आपको कुछ भी question रहेगा, we'll be more than happy to answer the questions. So today's topic is regarding the important pointers to keep at the back of the mind. जब भी आप index option में trading कर रहे हो, for anyone who's trading in index options, what is the important things that you should keep at the back of your mind when you're trading in index options? So that is what today's session is completely about. It's a very interesting topic. Many people who trade in index options may know the trading part of it, but will not know the key things to keep at the back of the mind. मतलब क्या क्या important factors है जो index को actual movement जो देता है. What are the important things to keep at the back of your mind that should be known in this session? Yeah, so without wasting any further time, let's just go through the session. तो आज के सेशन में मैं ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ. व्हाट इज इंडेक्स कॉम्पोजिशन. हर एक इंडेक्स का कॉम्पोजिशन अलग रहता है. सो जब भी आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए. जब भी आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, कौन से स्टॉक्स आपके रेडार में रहना चाहिए. लाइकवाइज फिन निफ्टी एंड मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी, जो एक नया इंडेक्स जो लॉन्च किया है एनएससी ने, उसमें भी कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए. सी एट द बैक ऑफ योर माइंड, इफ यू नो, सी आप अगर एक फिल्टर रखोगे यार, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली हाई मार रहा है, then you know that in today's trading session banking and financial sector stocks are going to do good, क्योंकि you know that HDFC बैंक का वेटेज कितना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. कौन से स्टॉक्स का वेटेज कितना है, कौन से सेक्टर्स का वेटेज हाई है, and what is it that actually moves the market during the trading hours is what we'll be covering in today's session. And at the end of the session we'll be having key pointers in terms of risk management भी. आप देख सकते हो अगर आप options trading कर रहे हो, the market over the last few sessions has become extremely volatile. In volatile I mean that choppiness बहुत है. 100 पॉइंट का 150 पॉइंट्स का मूवमेंट अभी कुछ नहीं रहा है मार्केट के लिए. पहले तो पूरे दिन में 100-150 पॉइंट्स यूज्ड टू बी द नॉर्म ऑफ द डे, बट आज के दिन में एक एक कैंडल, 10 मिनट का भी कैंडल, 5 मिनट का भी कैंडल 100 पॉइंट का आ रहा है निफ्टी में. सो दैट इज वाई इवन दो हाउएवर योर व्यू में भी आपका एक डायरेक्शन अगर आपको फिर भी लग रहा है, बट स्टिल यू नीड टू डू रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी. ये सब काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स में, because protecting capital is the most important thing when you're doing derivative trading. तो ये सारे टॉपिक्स है आज के सेशन के. विल बी गोइंग थ्रू देम वन बाय वन. सो बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, आई जस्ट वांट टू से कि बेनिफिट्स क्या है कि कोई अगर इंडेक्स ऑप्शंस क्यों करना चाहेगा. व्हाट इज इट दैट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर इन द मार्केट बाय डूइंग इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग. सो ऑप्शंस बाय नेचर एक लिवरेज प्रोडक्ट है. मतलब इसमें आपको ऑटोमेटिक लिवरेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर. आप अगर ऑप्शन एक लॉट बाय करते हो निफ्टी का, जो करंटली 22,200 22,400 लेवल्स पे चल रहा है, you are not just paying the premium and taking an exposure in a product by just paying 3,000-4,000 rupees. You are getting exposure to a product whose actual अगर आप contract value into the premium multiply करोगे, you will actually know what is the exposure that you are taking. It is an exposure of मतलब आप फ्यूचर में भी आप देखोगे या ऑप्शंस में भी देखोगे, the exposure is quite high. So it is like the strike price into the premium, you're taking an exposure of almost 5.5 lakhs, but you're taking it by paying just a very small premium. And काफी अच्छा मूवमेंट रहता है निफ्टी में because of the liquid nature of the product. Nifty is one of the most traded products in the entire world. तो एक डेटा रिलीज किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑप्शंस के डेटा को ट्रैक करता है. अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, व्हाट इट स्टेट्स इज दैट
in terms of the total options which are traded in the entire world, almost 78% of the options are traded on the Indian exchange itself. तो अगर आप सोचोगे कि 100 लॉट्स ट्रेड होते हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 78 लॉट्स इंडिया में ही ट्रेड हो जाते हैं. सो दैट इज द टाइप ऑफ वॉल्यूम्स दैट द एक्सचेंज इज सीइंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स. एनएससी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी पायनियर प्रोडक्ट्स है, क्योंकि दे वर द फर्स्ट वंस टू रिलीज इट. एंड वीकली ऑप्शंस जब से आए हैं, सी इन 2016 इज वेयर द वीकली ऑप्शंस केम इनटू प्ले. उससे पहले जो था 2001 में ही ऑप्शंस स्टार्ट हुए थे एनएससी के. बट द रियल प्रोडक्ट दैट इज बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस केम समवेयर इन मिड 2016. तो उसके बाद NSE soon realized that there is widespread demand for this particular product and they soon launched a wide set of products जिनका वीकली एक्सपायरी है. तो पहले बैंक निफ्टी आया, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी आया, निफ्टी के बाद फिन निफ्टी आया, एंड अभी फिन निफ्टी के बाद एक चौथा इंडेक्स जो आया है जो मिड कैप सिलेक्ट है. एक और इंडेक्स आया है निफ्टी का, दैट इज बट स्टिल अ मंथली इंडेक्स, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज न्यू इंडेक्स विच हैज बीन लॉन्च. लेकिन अभी उसका मंथली ऑप्शन है, अभी तक उसका वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस नहीं किए और उसके फ्यूचर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. सो इन टर्म्स ऑफ वीकली ऑप्शंस फ्रॉम द एनएससी साइड, बीएससी के भी अभी ऑप्शंस आ चुके हैं वीकली के, बट द मेन थिंग्स स्टिल द मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट्स राइट नाउ एट द करंट जंक्चर इज एनएससी ऑप्शंस. एंड एनएससी के जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, because of that, if you see NSE for the 5th straight year has been in terms of volume. See, in terms of option price, option contracts, there may be other exchanges which are having higher volumes, but in terms of volume, number of contracts traded, NSE for the 5th consecutive year has been the leading player in the entire world. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऑप्शंस का ट्रेडिंग हो रहा है. एंड द रीजंस फॉर दिस आर हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो फर्स्ट रीजन जो है लिवरेज, जो मैंने कहा था. काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स या ट्रेडर्स मेक यूज ऑफ निफ्टी फॉर हेजिंग ऑल्सो. तो अगर आपका एक पोर्टफोलियो है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द इंडेक्स टू हेज योर पोर्टफोलियो एज वेल. काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको स्पेक्युलेटिव में तौर पे भी यूज करते हैं, दैट इज टू कैप्चर 50 to 100 पॉइंट मूवमेंट इन द इंडेक्स एंड ट्राई टू मेक क्विक गेन्स. क्योंकि ये इतना लिक्विड प्रोडक्ट है, the movement also is quite swift. आप कोई भी एक स्टॉक में अगर देखोगे तो कभी इतना फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा इंट्राडे बेसिस पे. बट निफ्टी का अगर आप आज का भी चार्ट देखोगे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा था इंट्राडे बेसिस पे. बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. सी, इट इज नॉट एवरी डे इज अ ट्रेंडिंग डे, सम डेज आर क्वाइट चैलेंजिंग. सो बट द मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी. अगर ट्रेंडिंग डे है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेंड है तो आप बुलिश स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं. शॉर्ट मतलब ऑन द शॉर्ट साइड है तो आप बेरिश स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो. लाइकवाइज इफ द मार्केट इज साइडवेज और इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन, यू कैन यूज न्यूट्रल स्ट्रेटजीज एज वेल, जैसे कि आयन कॉन्डोर, आयन बटरफ्लाई, काफी सारे डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज है जो आप यूज कर सकते हो. एंड द इम्पैक्ट कॉस्ट ऑल्सो इज क्वाइट लेस व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस. व्हाट इज मेंट बाय इम्पैक्ट कॉस्ट? सी, इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ स्लाइटली इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन, जो मान लो कि उसका प्रीमियम 100 रुपए पे है. What happens in an illiquid counter is if you place a slightly larger trade, the buyer will quote, you want to place the trade at 100 but the seller will quote 104. उसको मालूम है liquidity नहीं है प्रोडक्ट में, तो if you have to purchase it, you have to purchase it from him itself and he will charge, when it is trading at 100 he will charge 104. तो आपको उधर ही at the start of the trade itself you will have a loss of 4 rupees without anything going against you. So that is known as impact cost. Likewise, जब भी आपको बेचना भी है, if there are no buyers in the market, again you may face an impact cost. You may be wanting to sell it for 100 rupees, but the buyer will quote a quote of 96, 94. So there also you will face a loss of 4 rupees. So that is why it is extremely important. Even if you are doing stock option trading, kindly consider to do it in the top 4, I mean in the top 20-25 stocks. We have highlighted the stocks also in the slides to follow. So it is better, means the impact cost drastically reduces when you're doing trading in liquid products. So that is one of the major advantage that Nifty Bank Nifty offers you. The product is extremely liquid, तो आप कितना भी order अगर आप if you place it in the system, it will get easily absorbed.
So now moving towards the contents of today's session. So first we'll discuss regarding Nifty. So Nifty जो है, it is one of the most widely tracked products in the entire world. तो अगर आप निफ्टी का कॉम्पोजिशन देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज हैव द हाईएस्ट वेटेज. तो ये काफ़ी सालों से फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है, इसका वेटेज हाईएस्ट है निफ्टी के अंदर. सो दैट इज वाई ऑन द डेज व्हेन स्टॉक सच एज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, then we have Bajaj Finance, when these counters are doing good, generally the mood of the entire market tends to be good, because the financial services has the highest weightage not just in Nifty. Financial services has the highest weightage in Nifty. It also has implications on Bank Nifty, and even if you see for Midcap Select, उसमें भी जो Midcap stocks है, the highest weightage in terms of sector is given to the financial service sector. So we'll go through each of the index in detail and we'll understand what is the composition. So see, you should know that which are the stocks which are actually getting the movement in the Nifty index. So if Nifty moves by 100 points, 200 points on a day, you should know which stock has contributed how much और कितने stocks ने कितना movement दिया है. Because if you know the weightage associated with each and individual stock, you will know कि आज, हाँ भाई, आज रिलायंस में मूवमेंट है, आज एचडीएफसी में मूवमेंट है, तो इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है. बिकॉज इफ दी स्टॉक्स विच हैव लो वेटेज, इफ दे मूव सिग्निफिकेंटली ऑल्सो, it will not cause a major impact on the index movement or price changes in the index. So जैसे कि मैंने कहा था, financial services has the highest weightage within Nifty, that is a weightage of 34%. उसके बाद recently due to the sharp correction which we have seen in the IT sector का weightage जो है वो second से अभी third place पे आ चुका है. So it has come down significantly in the last few months. प्रीवियसली अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मीन आईटी सेक्टर का वेटेज जो था निफ्टी के अंदर, दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट वेटेज, बट ड्यू टू द करेक्शन इन द आईटी स्टॉक्स रिसेंटली, द वेटेज हैज कम, आई मीन द पोजीशन ऑफ आईटी स्टॉक्स हैज कम फ्रॉम second, it has now come to third. So in the second position we have oil and gas. So due to the good movement that we have seen over the last few months in Reliance and some of the oil marketing companies such as ONGC, BPCL, HPCL, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स जो एक सेक्टर है एनएससी का, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, दैट पर्टिकुलर सेक्टर नाउ हैज द सेकंड हाईएस्ट वेटेज. So many people may think that Reliance is a multi-conglomerate company, but NSE के classification के according, Reliance still comes under oil and gas because its primary business in oil and gas, even though it has a lot of interest in a lot of sectors such as telecom, retail, काफ़ी सारे sectors में Reliance का presence है, but still according to the classification, Reliance is still placed under oil and gas. So that's the reason it has a very high weightage in this particular sector. So you should know the composition. What I want you all to understand is हर एक इंडेक्स का एक composition रहता है, कौन से स्टॉक्स उसमें भरे हैं एंड किसका स्टॉक का वेटेज कितना है, कौन से सेक्टर का वेटेज कितना है. That is very important to know when you're trading in index options. So this is a composition of Nifty. लाइकवाइज आप अगर स्टॉक वाइज कॉम्पोजिशन देखोगे तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है सेक्टर, कौन सा सेक्टर का वेटेज हाईएस्ट है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अ हाई वेटेज, देन यू शुड नो कि उसमें कौन से स्टॉक्स है जो हाई वेटेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी के अंदर. सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन सी दैट एचडीएफसी बैंक जो है, आफ्टर इट्स मर्जर, पहले तो एचडीएफसी का वेटेज जो था रिलायंस से कम था, बट पोस्ट द मर्जर बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, HDFC ड्यू टू दी करंट कैलकुलेशन मेथड ऑफ NSE, जो फ्री फ्लोट मेथड के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से HDFC बैंक का वेटेज हाईएस्ट है निफ्टी के अंदर. द वेटेज ऑफ HDFC बैंक इज अराउंड 11%. देन वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज विच हैज अ वेटेज ऑफ अराउंड 9.9-10%. उसके बाद आता है ICICI बैंक जिसका वेटेज लगभग 8% है. तो यू नो दैट द वेटेज ऑफ दीज 3 स्टॉक्स इटसेल्फ, ये 3 स्टॉक को अगर भी चार्ट आपके सामने रहेंगे एंड ये 3 स्टॉक में अगर अच्छी खासी मूवमेंट आती है, दैट इज HDFC बैंक, रिलायंस एंड ICICI बैंक, मोर और लेस यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी गुड मूवमेंट इन निफ्टी फॉर द डे. क्योंकि अगर ये सब स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट है तो अंडरलाइंग में भी डेफिनेटली मूवमेंट आ जाएगी.
सो निफ्टी बेसिकली इज इट कंप्राइजेज ऑफ द मोस्ट लिक्विड स्टॉक. तो ये कॉम्पोजिशन अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है. कितने स्टॉक्स है निफ्टी के अंदर? निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, विच गिव्स जिसका रिप्रेजेंटेशन पूरा मार्केट को कैप्चर करता है. तो आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी निफ्टी इज द मोस्ट स्टेबल आउट देयर एट प्रेजेंट. आप अगर बैंक निफ्टी, अगर आप किसी ने भी ट्रेडिंग किया है ऑप्शंस में, तो यू विल डेफिनेटली नो आउट ऑफ द टू विच इज मोर वॉलेटाइल, बैंक निफ्टी और निफ्टी. The reason why Nifty is a slightly less volatile in comparison to Bank Nifty is Bank Nifty is representing one particular sector. मतलब इसमें सारे के सारे सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स है. तो अगर कोई भी दिन पे कुछ बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ खराब न्यूज या पॉजिटिव न्यूज आता है, तो बैंक निफ्टी टेंड्स टू बिकम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल. बट दैट इज नॉट द केस विद निफ्टी. निफ्टी हैज अ गुड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. तो अलग अलग सेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है निफ्टी. निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज भी आता है, आईटी भी आता है, ऑयल एंड गैस भी आता है, मेटल भी आता है, फार्मा भी आता है, ऑटो भी आता है. सो इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच मेक अप द निफ्टी इंडेक्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल मार्केट मूवमेंट. तो सबसे जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स जो हम लोग कहते हैं आजकल हमारे मार्केट में, दैट इज निफ्टी 50. दैट इज व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट. क्योंकि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स है, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दोज 50 स्टॉक्स इज almost 70 to 75% of the entire market capitalization of the entire industry, because stocks such as Reliance, HDFC, ICICI, these are stocks which cannot be in terms of manipulation. Also, no one can manipulate these type stocks. They have extremely high liquidity, and that is why they have high weightage in the index. So this is a graphical representation of the major sectors within Nifty. तो आपको जब भी आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, you should know the weightage of the individual sectors. तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज 34.29 है, ऑयल एंड गैस का वेटेज 12.69 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IT हैज अ वेटेज ऑफ 12.32, ऑटो कंपनीज हैव अ वेटेज ऑफ नियरली 8%, मेटल्स का 4% लगभग है, पावर का 3% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैज अ वेटेज ऑफ 2.8. तो ये जो मैंने स्लाइड जो लिया है, ये सारा डेटा आपको NSE के वेबसाइट पे ही मिलेगा. सी, दिस इज नॉट डेटा विच आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन माय ओन. आई वांट एवरीवन टू बी फ्रीली एक्सेसिबल टू दिस डेटा एज वेल. तो आप NSE इंडाइसेस, निफ्टी इंडाइसेस करके एक वेबसाइट है जो NSE का ही वेबसाइट है. So you can go to that website and you can check the composition for whichever index that you are trading in. हर एक महीने के एंड पे there may be slight variations in the value. So you can go out there and check the particular index. आप अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर डबल क्लिक करोगे जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे, and if you double click on financial services, you will get the breakdown of the stocks which are there within financial services, और वो सब stocks का weightage भी कितना है इंडेक्स के अंदर. That also you will be readily available on the website. So anyone who wants to do slightly more analysis can go to Nifty Indices website and they can check all the indices करके ऊपर के टैब में एक डेटा है. There you can go and readily check all this particular data. So now moving forward to the next index, that is Bank Nifty. So Bank Nifty जो मैंने कहा था is a broad based index, मतलब इसमें सारे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं. निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है which is a dedicated index which covers or tracks the most liquid banking counters. तो बैंक निफ्टी में जो है इंडिया के टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज को एक इंडेक्स कंप्राइज करके एक इंडेक्स बनाया गया है, एंड हायर वेटेज जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को है बैंक निफ्टी के अंदर. तो बैंक निफ्टी जो एक इंडेक्स है जो करंटली विच गेट्स ट्रेडेड, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स इन द मार्केट, उसका कॉम्पोजिशन जो है 12 स्टॉक्स है उसके अंदर. दीज 12 स्टॉक्स कॉज द डे टू डे मूवमेंट विद इन बैंक निफ्टी. तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हाईएस्ट वेटेज ये पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर भी HDFC बैंक का ही है, बिकॉज इट इज द मोस्ट लिक्विड एंड द हाईएस्ट मार्केट कैप इन टर्म्स ऑफ ए स्टॉक. तो HDFC बैंक कौन से सेक्टर, आई मीन कौन से इंडेक्स में जो भी इंडेक्स में रहेगा उसमें ऑलवेज इट विल बी द हाईएस्ट वेटेज. तो बैंक निफ्टी में जो है इसका वेटेज 29% लगभग है. सो यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी. यू शुड सी द चार्ट ऑफ HDFC बैंक, एंड HDFC बैंक और ICICI बैंक, एक्सिस,
अगर आप ये 3 स्टॉक्स का वेटेज चेक करोगे, इट इज ऑलमोस्ट 65 to 70%, मतलब इतना वेटेज ये 3 स्टॉक का ही है. So you have 20, almost 29%, which is bank, I mean HDFC Bank. Somewhere around 23% is ICICI Bank, and then we have Axis Bank, which has a weightage of nearly 9%. The first or the highest weightage which is given to a PSU bank is SBI. So SBI जो है, it comes at the number 4 position, which has a weightage of nearly 9.57%. तो पीएसयू बैंक्स जो है, ऑलमोस्ट 3-4 स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स के, दैट इज कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, लेकिन इन सब का वेटेज कम है. सो यू विल सी दैट देयर मे बी डेज व्हेन पीएसयू बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, 5 to 8% अप, बट इनका वेटेज कम रहने के कारण बैंक निफ्टी विल नॉट बी सो हाई. बट इफ अ स्टॉक लाइक एचडीएफसी बैंक और अगर आईसीआईसीआई बैंक is up anywhere between 5 to 8% in a day, bank nifty will definitely be up by almost 3 to 4%. So that is the power that these particular stocks tend to command in the market, and that is why you should know the weightage. अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, at the back of your mind you should know what is the weightage of the individual stocks in the index. So like I told you, बैंक निफ्टी जो है, it comprises of the most liquid large banking counters. 12 कंपनी है बैंक निफ्टी के अंदर, एंड बैंक निफ्टी इज, इसका भी मेथड जो एनएससी यूज करता है कैलकुलेशन के लिए, इट इज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो जिसका हायर फ्री फ्लोट है, जिसका हायर स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, दैट स्टॉक विल हैव अ हायर वेटेज विद इन द इंडेक्स. तो इसी के कारण एचडीएफसी बैंक, जिसका हाईएस्ट फ्री फ्लोट है मार्केट में, इट हैज द हाईएस्ट वेटेज विद इन बैंक निफ्टी. So I hope everyone is understanding the concept or the crux of what we are trying to cover. So this is the breakdown of बैंक निफ्टी. इसका वापस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये पर्टिकुलर स्लाइड में. आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है, दैट इज 29.04. It is followed by ICICI Bank, which has a weightage of 23.82. Axis Bank we have at the number 3 position, which has a weightage of 9.76, and SBI which has a weightage of 9.57. तो ये अगर आप 4-5 स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रैक करोगे, you will have a very good idea of the trend within bank nifty. So many times what I have observed based on my personal experience is, not always all the stocks will be in trend. The days when ICICI is doing good, HDFC will be in a downtrend. When HDFC is doing good, ICICI will be in a downtrend. This is normally what has been observed. Good correlation till some time back was observed between HDFC Bank and Kotak. So I used to observe that when HDFC Bank was doing good, Kotak also generally tends to be in the momentum side. Likewise, Axis and ICICI Bank, these are the two counters which tend to move in the same trend or in the same direction. So it is never that you will feel, very rarely that you will get all the 4-5 top bank nifty stocks moving in the same direction on the same day. It is only when there is some major announcement or some public policy change, on those days itself you will see good traction in all the major banking counters in one direction in one trading day. Now let us move to the third index, that is Fin Nifty. So Fin Nifty is also an index which has very similar characteristics towards Bank Nifty. So Fin Nifty was designed because they wanted to introduce an index which is more broader in terms of representation in comparison to Bank Nifty. तो बैंक निफ्टी में जो है 12 ही स्टॉक्स है, सभी के सभी बैंकिंग स्टॉक्स है, दैट इज इधर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स. But in the case of Nifty Financial Services, it is a slightly broad index. Nifty Financial Services के अंदर बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी है, काफ़ी सारे दूसरे कंपनीज है जो फाइनेंस के सेक्टर में, but other than banking counters. So we have the likes of PFC, REC, we have Bajaj Finance, श्रीराम फाइनेंस. तो काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स ये पर्टिकुलर सेक्टर में आ जाते हैं. द इंटेंशन ऑफ एनएससी वाज टू मेक द इंडेक्स मोर ब्रॉड बेस्ड इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी. सो
सो ये फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी रहता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम एन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जो निफ्टी का जो एक्सपायरी था, जो दैट इज द फर्स्ट इंडेक्स दैट वी कवर्ड, दैट इज ऑन एवरी थर्सडे, मतलब हर थर्सडे को उसका एक्सपायरी रहता है। निफ्टी का रिसेंटली लॉट साइज भी चेंज हुआ था, सो फिन निफ्टी का भी लॉट साइज चेंज होने वाला है। इट इज इन द प्रोसेस, बट टिल नाउ इट इज स्टिल एट 40। बट निफ्टी का जो लॉट साइज है दैट हैज कम डाउन टू 25 फ्रॉम प्रीवियसली 50, एंड बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है that is at 15. So you should know the lot size of the product that you are trading in as well. ये इंडेक्स में तो everyone more or less will always be knowing, but जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, that time it is very very important to know the lot size of the product that you are trading in. निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम रहता है इसका लॉट साइज क्या है। बट रिसेंटली देयर वाज अ रिवीजन इन द लॉट साइज ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी का लॉट साइज जो 50 रहता था, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इट हैज बीन reduced towards 25. The reason for this is the contract value had become quite large. तो कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में जब भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू काफी बढ़ जाता है, 10 लाख के ऊपर चला जाता है, दैट इज द टाइम द exchange considers to do a revision of the lot size. So recently we have had a revision in the lot size of Nifty. आगे जाके फिन निफ्टी और मिड कैप का भी रिवीजन होने का चांस है, wherein the lot size of fin nifty may be reduced from 40, they will come down towards 25, and mid cap का जो इंडेक्स है that is mid cap CP select, उसका भी लॉट साइज 70 से 50 करने का इंटेंशन है एक्सचेंज का। सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ फिन निफ्टी। वापस फिन निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज जो है HDFC को और ICICI बैंक को ही दिया गया है, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स विच हैव द हाईएस्ट वेटेज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट। प्लीज डू नोट दैट इंडेक्स कॉम्पोजिशन जो कंस्ट्रक्शन जो है उसके हिसाब से कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक cannot have a single weightage of more than 33% in the index. So maximum, even though the free float of HDFC may be how much ever, its weightage will never cross 33% in any particular index. So it is now currently capped towards the upper limit. तो अभी currently 31.12 पे है. The highest that the weightage can go is towards 33%, and the top 3 stocks index composition में they can never cross 66%. मतलब 3 स्टॉक का वेटेज इंडिविजुअल अगर आप कैलकुलेट करोगे, दैट ऑल्सो कैनॉट नेवर क्रॉस 66%, बिकॉज देन those stocks will entirely move the index itself. So there are certain caps that the exchange has come up with. So even though there is very high weightage which is given towards HDFC, ICICI, Axis, Kotak, SBI, no 3 stocks will have a weightage of more than 66% at any point of time, and no individual stock will have a weightage of more than 33% within the index. So these are very important things to keep at the back of your mind. Now, like I highlighted with Bank Nifty, you should understand the index composition clearly. So tomorrow if there is a gap up in a stock like ICICI GI जिसका वेटेज 1.19% है फिन निफ्टी के अंदर, कल अगर ये 20% का सर्किट भी अगर मारे, it will not have a major, मतलब significant impact on the price changes of fin nifty, because the weightage within the index is less. But tomorrow for some reason if HDFC bank is up 5%, fin nifty will be up 3.5 to 4%, because that one individual stock, that is HDFC bank, has a weightage of nearly 31%. मतलब almost 1/3 of the exchanges is controlled by HDFC bank itself. तो HDFC का कैसा मूवमेंट रहता है, वैसे ही फिन निफ्टी का फॉर मोस्ट ऑफ द डेज द मूवमेंट विल बी इन द मार्केट. सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन एन इंडिविजुअल sector based index. So Nifty Financial Services is designed to reflect the behavior and performance of the Indian financial markets, which includes bank, institution, housing finance, insurance companies and other financial services companies. तो फिन निफ्टी में जो है 20 कंपनी है which make up the index. Now coming towards the latest index that has been introduced, that is the Midcap Select Index. तो ये ऑलमोस्ट थोड़े महीने हो चुके हैं ये इंडेक्स को आके मार्केट में.
This is an index which captures the movement in the mid cap stocks. तो mid cap select index जो है इसका, this index is a composition of the top 150 companies. तो 150 companies में से top 25 stocks चुने गए हैं. तो mid cap select mid cap stocks, that is एक mid cap index है which has 150 stocks within it, and उसमें भी top 25 stocks को चुने गए हैं based on the free float and market capitalization. तो ये पर्टिकुलर सेक्टर, ये पर्टिकुलर इंडेक्स में जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी हाईएस्ट वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया है. सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन क्लियरली. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिड कैप इंडेक्स? कैपिटल गुड्स जो है इसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है. देन वी हैव स्टॉक्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल, टेक्सटाइल. तो एक इंडेक्स जो बना है, इट इज यूज्ड टू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ द मिड कैप काउंटर्स. तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स में जो है हाईएस्ट वेटेज जो है इट इज गिवन टू इंडियन होटल्स. तो इंडियन होटल्स जो स्टॉक है इसका वेटेज लगभग 6.5% है. दैट पर्टिकुलर स्टॉक हैज द हाईएस्ट वेटेज इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. उसके बाद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द सेकंड स्टॉक which has the highest weightage within the mid cap index is Cummins India, if I am not wrong. So first stock is Indian Hotels followed by Cummins India. So this is another very good data which the exchange provides. So every day on a live basis you can check which are the stocks which are contributing towards the movement of Nifty. तो अगर निफ्टी में 50 स्टॉक है तो कौन से स्टॉक्स कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी के मूवमेंट के. सो इफ द इंडेक्स इज अप 113 पॉइंट्स फॉर अ गिवन पर्टिकुलर डे, यू कैन काउंट दैट रिलायंस ने contributed around 30 points, L&T contributed XY points, then we have HDFC Bank. So individually every bank can be calculated. I mean every stock contributes a certain number of points towards the actual movement of the index, and likewise there will be stocks which have corrected on the downside and which have eroded the profit of the index. So this is also very important to track. अगर आप कोई भी पॉइंट पे आपको जानना है कि इंडेक्स का जो, इफ सपोज द इंडेक्स इज अप 100 पॉइंट्स, which are the stocks which are contributing towards this movement, you can go to the NSE website, जो NSE Indices का website है. Over there you will get to see over there which are the stocks which are contributing how much points at any point of time towards the movement of the market. So along with stocks the sectors are also available. तो आपको कोई भी पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि ऑयल एंड गैस कितने मतलब द पर्टिकुलर सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग हाउ मेनी पॉइंट्स टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ निफ्टी. देन वी हैव ऑटो सेक्टर, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड वाज मेड yesterday. So in yesterday's trading session the index was up 113 points on a closing basis. The only two sectors which closed or the three sectors which closed in the red were healthcare, which was down, means in terms of points you can say it was down, which contributed negatively 2.2 points. Then we have information technology and fast moving consumer durables. तो ये तीन sectors जो है negative territory में कल बंद दिए, which dented the profits of Nifty to an extent. So this is very important to know which are the sectors which are contributing towards the movement of the market and which are the stocks which are contributing towards the movement of the market. Like I highlighted at the start of the presentation, there is a concept known as impact cost, जो liquidity का बहुत important है कोई भी आप stock या sector में trade करते समय. So always consider doing trading in the most liquid counters. जिस counters में liquidity है उसी counters को चुनिए intraday trading के लिए. These are few of the stocks that we have highlighted where traders can consider to do intraday trading because the liquidity or impact cost is minimal in these particular counters. So company like Axis Bank, TCS, ICICI Bank, Tata Motors, Maruti, Tata Steel, Bharti Airtel, Hero MotoCorp, HDFC, ये सारे counters are extremely liquid.
So these are the frontline counters. And अगर आप at the money या slightly at the money options में इन particular stocks में trade करोगे, you will face minimal impact cost. These are the few points. अगर आप options में trade कर रहे हो, it is important for us to highlight the dangers associated with trading as well in terms of the precautions that you have to take. मतलब अगर आप कोई भी अगर options में trade कर रहे हैं, there are certain points to know when you're doing trading in derivatives, because derivatives is a double-edged sword. इसका ये मतलब है कि derivatives में challenge क्या है, दिक्कत क्या है. अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, यू हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड टू गेट योर व्यू राइट. मतलब आपको 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही आपको पूरा व्यू सही लाना है, या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन के अंदर आपको व्यू सही बैठना चाहिए. देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर यू टू मेक एन एरर, एंड इवन इफ यू मेक एन एरर, what are the very important things that you should keep at the back of your mind? We have tried to highlight in this particular slide and the next slide. So for a trader who does option selling, जो option selling करते हैं, see there are two types of traders. One is an option buyer, जिसका view is more towards the buying. मतलब वो अगर उसको चार्ट पे bullish लग रहा है charts, then he considers to do option buying, that is call option. Yeah, that is what he considers. If he feels that the market could witness a correction, then he buys put options. That is what basically a buyer of a option does in the market. Likewise, there is for a buyer, there is also a seller in the market, जिसका view exact opposite रहता है compared to a buyer of an option. But for sellers of option, जो selling करते हैं option premium, in order to capture the option premium, there are certain challenges. So current market scenario में there are sudden spikes or swings in the market. तो आप देख रहे हो कि आज के सेशन में भी there were almost 3 to 4 candles wherein there was within 5 minutes Nifty witnessed a movement of almost 100 points. तो अगर आप एक दिन में 4 बार 5 बार आप देखोगे कि निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है within a very short period of time, for option sellers this becomes very challenging, because there is a very good chance that they are, even if they maintain stop losses quite far away, it may get triggered in such type markets. The other point is when the volatility in the market increases, the premium, that means the higher margin, initial margin is also charged by the broker. तो जब भी volatility बढ़ जाता है, risk भी बढ़ जाता है if you are an option seller. So to reduce the risk from the broker point of view, the broker generally tends to charge a higher initial margin. The other thing is mark to market margin. So the losses also can be quite high when the markets tend to get volatile. So that is what we just wanted to highlight, that if you are an option seller, be careful of certain points and always consider to maintain a stop loss. Or if you are doing overnight selling of options, always do it in a hedged manner. मतलब अगर आप भले ही एट द मनी का कॉल या पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो, kindly consider to buy a slightly far out of the money call and put option, because even though you are very certain about your view, the markets can be very challenging and can show sharp movements on any particular day. This is another slide regarding derivative trading. इसमें हमने कहा है कि always consider to maintain a stop loss. So stop loss is one of the most simple and most useful products which is there. Do not think of stop loss as a negative thing. It is a tool which helps you protect your capital, and protecting capital is one of the most important things when you're doing derivative trading, because जब तक आपका capital है, you can do multiple trades. If your capital gets wiped out, you will not be in a position to do multiple trades. So भले ही आपका पोजीशन कट जाता है, it is just for that particular view that your view has gone wrong. Do not be disappointed. You have multiple opportunities in the market to regain your position, but please do maintain a stop loss when you're doing trading in options. The another point is leverage. तो जब भी मार्केट काफ़ी volatile हो जाता है, reduce down the number of quantities that you trade in the market, because the markets may be extremely swift. You may not be able to execute your trades in a comfortable manner, and if the market gets volatile, you do not want large losses in such situations. The last point is hedging strategies. तो जब भी market volatile हो जाता है, consider to do trades in a hedged manner, especially अगर आप overnight positions carry कर रहे हो. तो see, अगर आप intraday कर रहे हो,
still you are in front of the screen. You can always close out your position at any point of time. आप अगर स्क्रीन के सामने हो, अगर निफ्टी में सडनली 200 पॉइंट्स का नेगेटिव मूवमेंट आता है, यू कैन ऑलवेज क्लोज आउट योर पोजीशन, बट दैट इज नॉट द केस if you are doing overnight trading in options. You will never know if there is a gap up or a gap down the next trading day, and if you have not hedged your position, you could face significant losses. So you can always consider to do spread strategies or combo strategies or iron condor, which are hedge strategies in the market. So that's an end of today's session. I hope I was able to deliver the content in a simple manner. It was a very different type of topic, I would like to say. Means in terms of till now we have covered topics which are more towards the trading part of it, but this is towards slightly more towards the market knowledge that you should have when you're doing trading in index options. I hope I was able to deliver the content in a simple manner. थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं शुक्रगुजार करूंगा फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड हैविंग अटेंडेड टुडेज सेशन. थैंक यू. नाउ वी कुड स्टार्ट विद द Q&A सेशन. तो पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding today's session, we would be more than happy to take them. Thank you. So we have Shamal Sarkar. So thank you, sir, for attending today's session. So there is a question from Tanmay regarding, can you tell me trading based on India VIX? Surely, sir. We can take a minute and discuss this particular point. See, India VIX, which is there, is an index which is calculated by the exchange itself. We do not have to put much into the calculation part of it. The calculation takes into consideration far outdated options. Matlab, far out of the money options which are there, these get taken into calculation. मतलब अगला सीरीज का options, that is call and put options, दोनों को लिया जाता है कैलकुलेशन में. First we'll just understand a bit on the index point of view. So if you see, the next month contracts are taken into calculation, call and put options. When the market is in a panic phase, see the India VIX जो है, it can go up based on sharp buying of option. तो option call option buying भी हो सकता है और वो put option buying भी हो सकता है. Any of the factors can cause the India VIX to go up. But we generally see that there is panic buying of put options only. There is never panic buying of call options. That rarely happens. The reason for this is majority of the traders are long only in the market. मतलब सभी का position on a most of the time 80% traders का will be on the long side. Now let us take the scenario, the current scenario, like there is the outcome of the union election. So at the current scenario, there are a lot of traders who have huge positions in the market, and in order to hedge their position, or if they feel panic in the market, they go ahead and buy far out of the money outdate, मतलब next month के June series, because the election outcome will come on 4th of June. So they will not buy the current series option, they will buy the next series option. And that is why we have seen a sharp uptick in India VIX. India VIX, which had gone down below levels of 10, has witnessed an uptick towards 22 levels. The reason for this is there has been a sharp surge in buying of put options of the next series to hedge their underlying current portfolio. So I hope you understand that generally India VIX is taken as a contrarian indicator. इसका मतलब है, it is, if you see the chart of India VIX, it tends to be contra to the price movement of Nifty. So you will see that if India VIX is gradually moving up, Nifty tends to be on the moving on the downside. Generally, if you see the chart of VIX and Nifty. So you can make use of India VIX as a contrarian indicator. Please note that it is not the only indicator, but it is a very good tool to gauge the panic in the market. So I hope you understand that, like I mentioned, India VIX can go up because of buying of call option or put option, but most of the time India VIX goes up because of there is panic buying of put options. So that is why when there is buying of put options, when you do panic buying of put options, only when you have fear that the market can go down.
So that is why India VIX is known as a contrarian indicator. It has most of the time it has an inverse chart towards Nifty. The real times when you come to know the price of India VIX is when there is actually an unknown event in the market. See, elections is still an event wherein you know that the outcome will come on 4th of June. Event खत्म होने वाला है. So if you see the historic price chart pattern of India VIX post the union elections, India VIX is definitely bound to come down from 20 to 22 levels. We expect it to come down back towards its average moving range of around 13-14 levels, if not lower. This has been always observed. The real panic what we saw was during COVID time. तो अगर आप चार्ट खोल के देखोगे इंडिया विक्स का ड्यूरिंग COVID time was really an event which no one knew what was going to happen in the market. So that was, I feel, one of the real black swan events. किसी को मालूम ही नहीं था किधर से आ गया कोविड, and the panic which set in the market was extremely sharp. तो अगर आप देखोगे उस समय में जब इंडेक्स गिर रहा था, इंडिया विक्स हैड शॉट अप ऑलमोस्ट टू 86 लेवल्स, जो अभी 22 पे है. दैट इज ऑलमोस्ट 4 times ऑफ व्हाट इट इज करंटली एट दैट टाइम. So that was the real indicator that there was panic in the market. The other time which we saw this was during demonetization time, which was also a slightly unknown event. So these are the events where that time you should actually track India VIX कि अगर उसमें continuously chart पे buying हो रहा है, मतलब if there is surge in India VIX, you can predict that there could be further correction in the market. So that is how you can make use of India VIX as a tool to predict whether the market trend could continue on the downside. So Tamal, I hope I was able to answer your question in a simple manner. Thank you. So there is a question regarding BSC derivatives. Yes, sir. The proposition is there, and definitely we will soon be implementing it in the next few months. BSC derivative contracts also we will be implementing on our platform. Thank you. I would like to thank Siddharth also, because for most of our sessions, I have seen that you make an effort to attend our sessions. So thank you so much for attending our sessions, sir. Participants, if there are any questions, we could take them. Please do note that we'll be having multiple sessions in this particular month. We have one more session which is lined up, that is regarding risk management. I will be talking about position sizing, the different things that you should do to manage risk in this volatile markets. So that is also a new topic that I'll be trying to cover. If you have any suggestions from your end also regarding any particular topic, so can I have the recording of this session? I mostly assume that this session will be there in YouTube itself. So if you want at a later time, I'll confirm this also, but I presume that these sessions now remain on YouTube. So at the end of the session also, I guess you'll be able to access it. So I conclude that there are no questions at the current juncture. So if there are no questions, we could end the session for the day. Thank you to all the participants. I would like to thank the participants once again for taking the time out and having attended today's session. Thank you so much. Yeah, so there is Kalyani Sahu. So there is strategies for bullish and bearish. That's a topic. I'll just give you the names if you want, and I can just explain the basic crux of it. But that's a topic for an entire session itself. I'll take derivative strategies. एक पूरा session लूंगा उसके ऊपर. So you can definitely attend it at that time. So I'll just explain for bullish strategy, a strategy in terms of strategy, what you can consider, especially if you want to carry forward your position. तो आप देख सकते हो in the last 2 trading sessions there was a reversal which was seen in the market. तो निफ्टी जो almost 22,100 and 22,800 levels तक गया था, and उधर से एक रिवर्सल आ गया था मार्केट में. But you do not know how far this reversal could play out in the market. So you have a moderately bullish view on the market. आपको लग रहा है रिवर्सल है, इधर से मार्केट बाउंस हो सकता है, but you do not know how far the trend can continue, because the markets are very choppy at the current juncture, because the background scenario is the election is currently underway.
So what you can do in such a scenario is along with buying a call option, तो आपको लग रहा है मार्केट में तेजी है तो आप 22,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो. इसी के साथ साथ आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेचना भी चाहिए. द रीजन फॉर दिस इज यू गेट मार्जिन बेनिफिट as well as the premium cost comes down. So suppose the cost of the 22,000 call option is 100 rupees and the cost of 22,000 250 or 200 call option is 30 rupees. So because you have sold the 22,200 call option, आपका net cost जो है ये particular trading का टू ट्रेडिंग का दैट कम्स टू 70 रुपीज. प्रीवियसली अगर आपने सिर्फ एक नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते थे, द कॉस्ट ऑफ द ट्रेड वुड हैव बीन 100, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम. तो 100 into 25 जो लॉट साइज है दैट वुड बी योर कॉस्ट, दैट इज 2,500 वुड योर कॉस्ट. बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी योर कॉस्ट कम्स टू 70 and you make profit as long as the index is above 22,070 because 70 पॉइंट का तो आपका ब्रेक इवन है. पहले तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 100 रुपए का था. इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी नजदीक आ जाता है एंड द कॉस्ट ऑल्सो reduces. सो दिस इज नोन एज अ बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी. लाइकवाइज आप पुट साइड पे भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, wherein you buy an at the money put option and you sell a slightly out of the money put option. The only downfall in this particular strategy is अगर एक शार्प 500-600 पॉइंट का रैली आ जाता है मार्केट में, यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द एंटायर रैली बिकॉज इंडेक्स कितना भी 22,250 के ऊपर चला जाए आपका प्रॉफिट लॉक्ड रहेगा. मतलब यू विल नॉट हैव मोर प्रॉफिट even though the index moves by 700-800 points because you are playing this particular strategy with limited profits and limited losses. मतलब आपको हेज भी करना है आपका पोजीशन और आपको प्रॉफिट भी खाना है. सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्क्स. If you wanted to capture a extremely one directional rally, then the best thing is you buy a naked call option, but that becomes challenging when the markets you want to carry forward your position to the next trading day. So I hope I was able to explain. So this is known as a bull call spread on the bullish side, and अगर आप bearish side पे कर रहे हो, it is known as a bear put spread. So there is regarding how to open a one India one plan. It is better to get in contact with your dealer sir जो आपका RM है. It would be better to get in contact with him and he'll definitely guide you regarding this particular method, how to reduce or how to change your brokerage plan if that is your interest. So there is a question regarding derivatives में हमेशा नुकसान होता है. That would, I don't think that would be the case because see it is I agree derivatives is quite challenging in comparison to cash market trading because in derivatives आपका टाइम फ्रेम जो है इट इज वेरी लिमिटेड. मतलब आपके पास अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, द चैलेंज इज टू गेट दी पोजीशन और द व्यू राइट विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड. मतलब आपको 5 ही दिन है, उसी के अंदर आपको व्यू राइट करना है. या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यू हैव टू गेट योर व्यू राइट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो द गेम इज मोर अबाउट managing the risk reward, managing stop losses, managing position sizing. You have to be constantly in front of the screen. See cash market में क्या है, if you are away from the screen even for half an hour 1 hour, your position may more or less be closer towards where you have purchased it or 1-2% here and there. But in derivative trading, especially Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, even within half an hour the movement could be significantly मतलब 5-6% तो काफी कम खोल रहा है. इट कुड बी 30-40% इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद इन हाफ एन आवर और 1 year, I mean 1 hour time period. So that is where the challenge comes. You have to be extremely swift when you're trading in derivatives. Decision making should be extremely fast. The time to think, analyze is much more shorter. You should be very swift in cutting your मतलब positions when they go wrong. So the game or the challenge in derivatives is slightly different in comparison to the cash market segment. So once you get used to it in terms of position sizing, risk management, definitely you may find it a bit more easier. So I will take all the suggestions what the participants are sharing as well, and definitely I will share it with the respective teams.
So that's it from the question perspective, I feel. We'll end today's session at the current juncture. Hope to see all the participants in the future sessions as well that we take from our end. Thank you so much.